Prime Minister Narendra Modi to kickstart BJP's election campaign in West Bengal with first election rally in Kolkata. Superstar Mithun Chakrabarti joins BJP. Large crowds turn up for Prime Minister's rally. Senior BJP leader and Home Minister Amit Shah on campaign trail in Tamil Nadu and Kerala interacts with people in Kanyakumari, campaigns for BJP candidate in the by-elections. Prime Minister Narendra Modi addresses the third Jan Aushadhi Divas celebrations today via video conferencing. Prime Minister dedicates the 7,500th Jan Aushadhi Kendra at Shillong during the event, says government committed to make available health services to all. COVID-19 vaccination gains pace in the country. More than 2 crore 9 lakh doses of vaccine administered in country so far. Over 14 lakh vaccine doses given on 50th day of vaccination. US Senate passes $1.9 trillion COVID relief package to provide $1,400 direct payments to millions of Americans. This was the first legislative win of Democrats after gaining majority at the Senate. Biden says the payments can start to go out this month. And in sports and badminton, PV Sindhu storms into women's singles finals of the Swiss Open 2021 at Basel. PV Sindhu beat 4th seed Mia Blichfeld of Denmark 22-20, 21-10 in semi-finals. Namaskar and welcome. You're watching DD India. I'm Sakal Bhatt, and the top story we are tracking for you this Sunday. Well, campaigning is gaining momentum for assembly elections in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. Prime Minister Narendra Modi will be addressing a mega rally at Brigade Parade Ground in Kolkata today, and this is going to be the first election rally to be addressed by the Prime Minister of India after poll notification for West Bengal was issued. Elections for the West Bengal Assembly will be held in 8 phases, beginning with polling for 30 seats on March 27th. And in other news, Jan Aushadhi Divas is being celebrated across the country today. On the occasion, Prime Minister Modi dedicated to the nation the 7,500 Jan Aushadhi Kendra at northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences in Shillong during the event. He also interacted with the beneficiaries of Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. Prime Minister said that apart from providing affordable medicines to all, the Jan Aushadhi Yojana has several benefits, including employment generation and ensuring dignity and hygiene for women. ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ ₹2.5 में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। Prime Minister also gave awards to stakeholders by recognizing their excellent work. So far, more than 11 crore sanitary napkins have been sold at Jan Aushadhi Kendras. Essential supplements and nutrition for pregnant mothers are also being sold at these outlets. Prime Minister said that such steps go in a long way in ensuring self-reliance for our daughters. अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए
जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। Prime Minister also said that Made in India vaccines are not only helping people in India, but are also being distributed globally. These vaccines are available for free at government hospitals, and the price has been capped at rupees 250 in private hospitals so that everyone can afford them. राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे, और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। Prime Minister urged state governments and departments to set up more than 75 Jan Aushadhi outlets across at least 75 districts to mark 75 years of independence. राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो, तो अपना जीवन खपा देते हैं, और ये आपने करके दिखाया है। Well, this was just a quick snippet of what happened between the interaction when Prime Minister interacted with the beneficiaries, and also how Prime Minister lauded the efforts of Raju Bayani, who actually runs Jan Aushadhi store. And we also saw how Prime Minister urged him to continue creating awareness via Doordarshan and other methods. And now let's move on. And also, since we're talking about that interaction of Honorable Prime Minister with the beneficiaries of Pradhan Mantri, Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, now let's listen to what they had to say to the Prime Minister. कृष्णा जी नमस्ते। नमस्ते जी। कृष्णा जी बताइए। मैं पिछले 20 सालों से हाई बीपी, शुगर और दिल की मरीज हूँ सर। सर मैं एक दिन दवाई लेने जब हॉस्पिटल आई तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि की जो दुकान खोली गई है उसमें बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। मुझे जब आपकी मोदी जी की दुकान से जो दवाइयाँ मिलती है मेरे बहुत सारे पैसों की बचत हो रही है। अभी कितना पैसा पहले खर्च होता था, अभी कितना होता है? सर 1800-1000 रुपया खर्च होता है सर। और पहले कितना होता था? 5-6 हजार
1 महीने में देना पड़ता था सर। दवाइयाँ तो जरूर खानी पड़ेगी क्योंकि अब ये बीमारी ऐसी है कि घुस गई है, लेकिन आप भी कुछ योगा वगैरह करते रहिए। मैं रुबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे बताइए। पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है, और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी इसकी वजह से झटके आते हैं, और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है, और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयाँ मैं इसको खिलाती, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बहुत परेशान हूँ मैं। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहाँ से सस्ती दवाइयाँ खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली, मेरे पैसों की बचत हुई। आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयाँ उनको बहुत कम पैसों में मिल गई। और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। पहले से ही मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूं, लेकिन मेडिकल स्टोर वो भी हो कि जिसमें सेवा भी कर सकूं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बढ़िया कोई ये मौका नहीं था कि जिसमें सेवा भी हो और कमाई भी हो। तो आज 3 महीने में मेरी आवक 3 गुना हो चुकी है। अभी कितने लोग जन औषधि का फायदा उठाते हैं? अभी 1 महीने में मैं आपको बताऊं तो 14 से 1500 आदमी फायदा उठा रहे हैं, और ये यहाँ पे मोदी मेडिकल के नाम से ही फेमस हो चुका है सर। 7500 जन औषधि केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो एक प्रकार से समाज सेवा के मेरे सबसे बड़े साथी बन गए हैं। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते डॉक्टर कामत। सर, मैंने ये जन औषधि का एक अभियान 3-4 साल से शुरू किया। उसको मैंने जन औषधि जनोपयोगी अभियान बोल के शुरू किया। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि शाम के समय और रात के समय पहाड़ी जिलों में, दूर के जगह में अगर एक किसी का हार्ट अटैक होता है तो उनको ईसीजी करने में बहुत मुश्किलात होती थी। तो हमने एक अभियान चलाया 3 साल पहले। वो अभियान से हमने जनौषधि में ईसीजी मशीन लगवाया सर। डॉक्टर कामत, मैं सबसे पहले तो आपके इस सेवा भाव के लिए बधाई देता हूं। और आप कन्नड़ भाषा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपने मुझे एक अच्छा नारा दे दिया, जन औषधि जन उपयोगी। And here is what Raju Bhayani had to say to the Prime Minister. Raju Bhayani has been working tirelessly with a group of co-workers to distribute medicines through the coronavirus pandemic, throughout the coronavirus pandemic. राजू भाई नमस्ते। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते नमस्ते। मेरा राजू नाम- बताइए। सर, मेरा नाम राजू भायानी है, मैं अहमदाबाद का रहवासी हूँ। हम लोगों ने जब एक कोरोना की महामारी में हम सब जन औषधि मित्रों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की थी। हम लोगों ने सर घर घर जाके हमारे जो मरीजों है, जो रेगुलर पेशेंट है, बीपी डायबिटीज, उनको दवाइयाँ पहुंचाई है। सर, मेरे घर में भी एक हादसा हो गया। मेरे फादर की कोरोना की वजह से डेथ हो गई है। इसलिए उस समय सर हमें विचार आया कि मेरे साथ तो ये हुआ है मेरे परिवार में, तो किसी के परिवार में ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो सर हमने धीरे धीरे हमारे जन औषधि मित्रों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू कर दिया। करीबन हमने सर अभी 8 से 10 हजार मरीजों को दवा पहुंचाई है। हमारे साथ एक पूरी अभी सर 250 लोगों की टीम है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश इतनी जल्दी एक टीका का आविष्कार कर देगा। सर, 1 नहीं 2 नहीं 3 कंपनियों ने हमारे वहाँ टीका का आविष्कार कर दिया। अपने कई ऐसे देश है जहाँ पर टीका की उपलब्धि नहीं है, वहाँ पर भी आप पहुँचा रहे हैं। तो सर, इनके लिए हम सब जन औषधि मित्रों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ सर। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से
देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। क्योंकि इतना बढ़िया काम करते हैं तो मन करता है कि आपको एक काम बता दें। देखिए, जो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर है जहां टीका लगता है, आप वहां पर अपने साथियों की ड्यूटी लगाइए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वैक्सीन हो जाए, उनका जो फॉर्म वॉर्म भरना होता है वो भरना हो जाए, उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। आप देखिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। हाँ, तो करेंगे आप लोग? सही में करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो आदर्श कर देंगे हम सर। बहुत धन्यवाद राजू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Well, 2023 has been declared as International Year of Millets after the UN General Assembly unanimously backed India's resolution for the same. Prime Minister said that the world is acknowledging the twin benefits of the climate-smart and nutritious grain. आज मोटे अनाजों को ना सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है, और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है। Mexican artist Frida Kahlo's home reopened to visitors in Mexico City on Saturday after weeks of lockdown to prevent the spread of COVID-19 infections. Kahlo's Casa Azul, her family home in Coyoacan, is now Frida Kahlo Museum. It is one of the capital's most popular tourist attractions where visitors pay homage to Kahlo's life and works. Museum capacity is set at 20%. Visitors must wear masks and practice social distancing. Kahlo began painting as a teenager while recovering from a horrific tram crash in 1925. And the accident and the legacy of childhood polio left her in constant physical pain. Taking to painting as a means of self-expression, Kahlo's suffering is depicted in her very raw works. And since a hit Hollywood film on her life, Kahlo has also emerged as an international icon. Well, some more news back home. Campaigning is on in full swing for assembly elections as well as for by-polls to Kanyakumari Lok Sabha constituency. That is also gathering momentum in Tamil Nadu. Home Minister Amit Shah launched BJP's Vijay Sankalp Mahasampark Abhiyan, which is a door-to-door campaign in Suchindram town in Kanyakumari. Amit Shah visited 11 houses during his door-to-door campaign in Suchindram. Amit Shah also appealed to people to vote for Pon Radhakrishnan in the by-polls to Kanyakumari Lok Sabha constituency in Tamil Nadu. Amit Shah also expressed hope that BJP AIADMK alliance will form the next government in Tamil Nadu. कन्याकुमारी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी AIADMK के प्रत्याशी, NDA के प्रत्याशी श्री पोन्नार जी के प्रचार का शुभारंभ हुआ है। आज हमने 11 घरों में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देने का काम किया है। कमल को घर घर पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की। मैं कन्याकुमारी की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए। Earlier, Amit Shah offered prayers at Suchindran temple in Kanyakumari.
President Ramnath Kovind is on a two-day visit to Madhya Pradesh. President Kovind visited Damoh today. He laid the foundation stone for renovation work of the Sindhu Fort. President Kovind also graced the Janjatiya Sammelan, which was organized by the Tribal Welfare Department, Government of Madhya Pradesh at Singrampur village in Damoh district of Madhya Pradesh. President was accompanied by Madhya Pradesh Governor Anandiben Patel, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and Union Minister of State for Steel Fagan Singh Kulsate. President Ramnath Kovind also inaugurated the virtual classes for tribal groups. President also highlighted the role of tribal communities to preserve the tribal heritage during the colonial rule. अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन न किया होता तो आज हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रहरी और रक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाया है। Madhya Pradesh Governor Anandiben Patel said that the tribal communities are India's strength. She also expressed the need to turn their talent into source of income. She added that more efforts are needed to help these communities flourish. हमारे आदिवासी भाई बहन, उनका यह सामर्थ्य हमारी जनशक्ति का परिचायक है। हमारी संस्कृति की इस विशेषता को संजोए रखना, विविधता का आदर करना और समन्वय करना ही हमारी ताकत है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके प्राकृतिक कौशल को आय के स्रोतों में बढ़ावा देने का माध्यम बनाया जाए। संस्कृति के संवाहक जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, कला कौशल और ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रोत्साहन देने के और अधिक प्रयास जरूरी है। इन प्रयासों में समाज, विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। More news and updates. The second phase of India's largest vaccination program of COVID-19 has gained a lot of momentum. Now, according to latest updates this morning, the cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered in the country has already crossed 2 crore 9 lakh mark, and a total of 2 crore 9 lakh 22,344 coronavirus vaccine doses have been given so far. Over 14 lakh 24,000 beneficiaries were vaccinated in 24 hours, last 24 hours. And now let's take a look at the COVID-19 updates from across the country. Now, as per the numbers by Union Health Ministry, 14,392 recoveries were recorded in the last 24 hours, taking the cumulative total of recovered patients to 1 crore 8 lakh 68,520. And with this, the recovery rate currently stands at 96.95%. India's total active caseload stands at 1.84 lakh today. The country's present active caseload also consists of 1.65% of the total positive cases. The fatality rate now stands at 1.41%. Well, some international news. The Senate on Saturday passed President Joe Biden's $1.9 trillion COVID-19 relief plan in a party line vote. After an all-night session that saw Democrats battling among themselves over jobless aid and the Republican minority failing in attempts to push through several amendments. The final bill includes $400 billion in one-time payments to 1,400 US dollars to most Americans, and also $300 a week in extended jobless benefits for the 9.5 million people out of work in the crisis, and also $350 billion in aid to states and local governments affected by the pandemic. The Senate voted 50-49 with no Republicans voting in favor, and it is one of the largest stimulus packages in US history. Although the fight is not over,
The fight is not over as the bill needs to return to the House of Representatives, which approved a slightly different version a week earlier. The chamber set a record in its longest single vote in the modern era. Senate Democrats used a process called reconciliation to pass the measure with a simple majority. Meanwhile, U.S. President Joe Biden said on Saturday that Senate passage of the coronavirus aid bill means that $1,400 US payments to most Americans will start to go out this month, and the bill's provision will speed up manufacturing and distribution of vaccines as well. He was speaking at the White House after the American Rescue Plan bill passed the Senate on party line 50-49 vote, and also added that over 85% of the American households will receive payments, with a couple with 2 children making $100,000 annually receiving about $5,600 US. I promised the American people that help was on the way. Today, I can say we've taken one more giant step forward in delivering on that promise that help was on the way. The resources of this plan will be used to expand and speed up manufacturing and distribution of vaccines, so we can get every single American vaccinated sooner than later. I believe we'll have enough by the middle of May. This plan will get checks out the door starting this month to the American people who so desperately need the help. This plan puts us on a path to beating the virus. Now this bill returns to the House of Representatives, which has done a great job from the beginning, where I hope it will find quick passage, so it can be sent to my desk to be signed into law. Well, let's quickly shift focus to Myanmar, where security forces have again reportedly used force on Saturday to disperse anti-coup protesters, a day after the UN Special Envoy urged the Security Council to take action to quell junta violence that this week left about 50 peaceful demonstrators dead and scores injured. Fresh protests were also reported in the biggest city of Yangon, where grenades and tear gas were also used against protesters. Meanwhile, reports of anti-coup protesters that are met with the tear gas from police in Lashio and Yangnao are also trickling in. Also, thousands of Myanmar protesters in front of UN headquarters in Bangkok demanding to take action as also making headlines. The Karen National Union, one of the most powerful and best established of Myanmar's myriad militia groups, took part in the anti-coup protest on Friday in the country's east. The former insurgents from the Karen ethnic minority joined villagers and township residents who took to the streets in a peaceful demonstration in Hapun, which is a Cayenne state. A statement by the KNU says the organization supports the protesters' demands to end military rule following last month's military coup. The escalation of the violence has put pressure on the world community to act to restrain the junta, which seizes power on February 1st by ousting the elected government of Aung San Suu Kyi. Myanmar's biggest protest turnout in Mandalay was also reported. And with that, it's time to wrap up this newscast this Sunday on DD India. Our special programming continues. We will be back with more news and updates. Stay tuned to DD India. Namaskar.